So what we have done in yesterday's lecture, we have defined what is a binomial process. What is a binomial process? You have n trials. Each trial can result in success or failure with probability p and 1 minus p. These trials are independent. Then x, the number of successes, is a binomial random variable. This is what we have defined yesterday already. We don't need to write it again. So values which x can assume is 0, 1, anything up to n. And what was the PDF? The PDF was NC x p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x. This was the PDF, and we denote it with b x comma n p, right? Then we had CDF, that was sum of b x n p x from 0 to r. We denoted it with b capital R and p, and we have tables for this. So this is a summary of what we have done yesterday. Okay, beta? Is this thing clear? So what is the binomial process? So you should understand that you have n trials, independent trials. Each trial is resulting in two outcomes, success and failure, with probability p and 1 minus p, and p remains constant throughout the experiment in all the trials. Then this was your thing which we have done yesterday. So let us just, before moving to next topic, I just want to do one more problem. So can you write down? A large chain retailer purchases a certain kind of electronic device, a certain kind of electronic device from a manufacturer. The manufacturer indicates that the manufacturer indicates that the defective rate of the device is 3%. The defective rate of the device is, इसका मतलब if you purchase 100 devices, there are chances like 3 devices will be defective. So you have to tell me the inspector, the quality inspector, randomly picks 20 items from the shipment, items from a shipment. What is the probability that there will be at least one defective item in that shipment, in that 20 randomly picked items? What is the probability that there will be at least one defective item in these 20 picked items? ये तो कल वाला ही है, कल ऐसे ही क्वेश्चंस किए थे. So can you tell me the answer for this one? So what you are doing, you are picking 20 items, right? You are picking first item and then you are checking whether it is a defective piece or a non-defective piece. Then you are picking the second item and so on. So basically this is a random process. N is equal to 20. How many pieces we have picked? 3, right? So कल क्या notation use किया बेटा? Okay. Okay. So P is equal to, what is P? इसमें हम सक्सेस किसको मान रहे हैं कि डिफेक्टिव पीस आए, क्योंकि डिफेक्टिव पीस काउंट कर रहे हैं, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव पीस इज 0.03. इज दैट ओके? इज दिस करेक्ट? Okay, so because
we are looking at what is the probability that x is greater than equal to 1. So what will be that? That will be 1 minus probability x is equal to 0. है ना? यही probability यही होगा ना? We are looking for that at least one defective should be there. So this is 1 minus what is this probability? बताओ बेटा क्या फॉर्मूला था? NC0 p raised to power 0 1 minus p raised to power n minus c. Okay? यही होगा ना? Is this incorrect beta? So we want that out of the 20 randomly selected items, one should be at least one should be defective. At least one should be defective मतलब we are looking for probability of x greater than equal to 1. अब जो कैपिटल x है वो कौन कौन सी वैल्यूज अज्यूम कर सकता है? 0, 1 up to n. So we have to exclude the case of this when x is 0 and the corresponding probability is from your binomial distribution. This is 1 minus कैलकुलेट करके आंसर मिल गई 0.456. ओके बेटा कैपिटल बी से हाँ वो आपको ऐसा करना पड़ेगा बी 20.03 माइनस बी 0.20. ओके वैसे कर लो जैसे मर्जी. दैट इज योर CDF 20 और 0 वाला आपने समझा. Then you can use your table, right? But table mostly हम तब यूज करते हैं जब यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हो और सम करना पड़े, राइट? एक टर्म हो तो हाँ तब भी कर सकते हैं. मतलब always you can do, you will get the same answer provided you have the table. इसका बी पार्ट है बेटा. सपोज ये आपका होमवर्क है, ओके? ये सब लोग मुझे करके बताएं. Suppose that the retailer receives 10 shipments in a month. उसी का पार्ट है ये, ओके? ऊपर वाले क्वेश्चन in a month and the inspector randomly tests 20 devices from each shipment per shipment. Okay. What is the probability that exactly 3 shipments, probability that there are exactly 3 shipments containing at least one defective piece in the 20 selected pieces. Okay, इसको करना खुद ही. The answer is 0.1602. थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सिचुएशन क्या है, कैसे फिट होगी. ओके, लेट मी नो इफ यू डोंट गेट इट, विल डिस्कस इट टुमारो. Okay beta, so we have a binomial random variable whose PDF we know. Right now we will see what will be the mean and variance of this variable, right? So your next topic is mean and variance of binomial random variable. Okay beta, so what is mean? Can you tell me? हमारे पास we will prove that expected value of x is NP and second that variance is equal to NPQ, where N is number of trials, P is probability of success in each trial, and Q is 1 minus P, that is probability of failure. So I want to compute expected
वैल्यू ऑफ x. सो दैट विल बी, क्या है फॉर्मूला बेटा बताइए, व्हाट इज ए मीन का फॉर्मूला क्या है? हाँ यहाँ भी ये डिस्क्रीट है ना, तो समेशन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, समेशन आर बोल दो या के बोल दो, के फ्रॉम 0 to n. ओके, आगे x इंटू, ये x बोल दो इसको, x 0 to n, x इंटू द पीडीएफ b x and p. किसी को डाउट इसमें? ऐसे निकालते हैं ना मीन, द वैल्यू इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीएफ and then you take the summation in case of discrete random variable. This will be summation x from 0 to n, x, what is this, ncx p raised to power x 1 minus p raised to power n minus x. Okay, so इसको ट्राई कर सकते हो that this value is np, but कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होगी. क्या हो गया, कहाँ थे, कोई बात नहीं. So there is another way. Okay, so you can prove that इसको कैलकुलेशन को मैनिपुलेशन करना, that this is np. A simpler way is I am writing right. बेटा जो अभी आए हैं, कल हमने बाइनोमियल रैंडम प्रोसेस पढ़ा था, कल थे आप लोग क्लास में? नहीं, अच्छा, तो आज हम उसका मीन और वेरिएंस निकाल रहे हैं. इससे पहले एक प्रॉब्लम करिए. सो राइट x एज i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस सो ऑन in. देखो n ट्रायल्स है वेयर i1 इज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ट्रायल. इसको बोलते हैं इट विल टेक वैल्यू 1 फॉर सक्सेस एंड 0 फॉर फेलियर. मतलब वो जो आपका मीन निकालने का डेफिनेशन है वो तो है ही हमेशा, बट हमेशा कैलकुलेशन इजी नहीं होंगी. देयर कैन बी अदर वे आल्सो जो इजी होगा मीन निकालने के लिए. तो मैंने क्या कहा, व्हाट इज x? x इज नंबर ऑफ सक्सेसेस. मैंने x को लिखा i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस in, वेयर व्हाट विल बी i1? i1 will be 1 if we get a success in the first trial, otherwise it will be 0. Similarly, i2 will be 1 if you get a success in the second trial, otherwise 0, and so on. So their sum will give you the number of successes or not, है ना? Is this in clear? i1 will be 1 अगर success है, i जो ij है this will be 1 if jth trial is a success and it will be 0 if jth trial is a failure. So sum of i's will give me the number of successes or not? Yes. Okay, so what is the probability that it will take value 1? probability of success क्या है, p ना. तो ij जो है उसकी वैल्यू 1 होगी with a probability p. yes or no? and इसकी वैल्यू 0 होगी with probability 1 minus p. is this thing clear बेटा? सबको क्लियर है? So what will be, now you see I am writing, I want to compute expected value of x, that will be expected value of i1 plus i2 plus in. So that will be expected value of i1 plus expected value of i2. ऐसे कर सकती हूँ. कल हमने लास्ट क्लास में हमने रिजल्ट्स किए थे कि you can separate. Now what is the expected value of i1? i1 की expected value इधर ही निकल जाएगी 1 into p प्लस 0 इंटू 1 माइनस p. राइट बेटा? सो i1 की मीन वैल्यू क्या है, p. सिमिलरली i2 की मीन वैल्यू क्या होगी, सेम है i2 भी, 1 इंटू p प्लस 0 इंटू 1 माइनस p एंड सो ऑन. in की भी सेम है, 1 इंटू p प्लस 0 इंटू 1 minus p. Does that make sense बेटा? What I have done, I have written my capital X as I1 plus I2 plus IN, where each ij is telling you the outcome of jth process in terms of 0 and 1, because your capital X has to be the number of successes. Okay, और ij जो हमने डिफाइन किया है उसका मीन निकालना है, so easy. Can you see 1 into p plus 0 into 1 minus p.
So that is P. So basically हमारे पास क्या आ गया? P plus P कितनी times? N times. So that is NP. Okay. So whenever you have a binomial random process, the mean will be N times P. Clear है बेटा सबको? Now you see कितना इजी हो गया. अदरवाइज ये वाला सम निकालना ऑल्दो कर लोगे आप, थोड़ा डिफिकल्ट है. ये कैसा होगा? 0 into something then 1 into that binomial coefficient plus 2 into that binomial coefficient. थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी to get it to NP. And this way it is so easy. अगर आप ऐसे करें. Is that thing okay बेटा? किसी को डाउट इसमें? How do I calculate this mean? चले आगे. So let us calculate variance then. Next मेरा x वही है I1 plus I2 plus IN. So what will be variance बेटा? variance का फॉर्मूला बताइए बेटा. पहले तो ये बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ वेरिएंस ऑफ I1 plus I2 plus IN. राइट. अब आपको मैंने बताया था व्हाट इज दिस वेरिएंस ax plus by. दैट इज a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x plus b स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y plus 2ab कोवेरिएंस ऑफ x and y. ये था ना फॉर्मूला. Okay, so if you have two random variables x and y and you are looking for the covariance of ax plus by, the formula was a square into variance of x plus b square into variance of y. ये हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर. ओके. नाउ इफ x and y आर इंडिपेंडेंट तो कोवेरियंस 0 हो जाएगा. तो उस केस में क्या आएगा? a square variance of x plus b square variance of y. Now here I1 I2 IN are independent. Okay, so this will be equal to coefficient 1 है सबका. So this will be 1 square variance of I1 plus 1 square variance of I2 plus so on 1 square variance of IN, because I1 I2 IN are independent. Is that okay बेटा? ये वाली चीज 0 हो गई ना, कोवेरियंस है ही नहीं, तो क्या होगा? वेरियंस को ऐड कर लो और कोफिशिएंट भी 1 है यहाँ पे. 1 into I1 plus 1 into I2 and so on. Now what will be the covariance of variance of ij ऐसे लिखा हुआ 1 with probability p, 0 with probability 1 minus p और expected value अभी हमने निकाल लिया that is p. अब मुझे वेरियंस बताइए. व्हाट इज द वेरियंस ऑफ ij? वेरियंस का फॉर्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ij स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ij का स्क्वायर. ये था ना वेरियंस का फॉर्मूला. ओके. सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ij स्क्वायर? दैट विल बी 1 स्क्वायर विद द प्रोबेबिलिटी p plus 0 square with the probability 1 minus p minus this we have already computed np square. Sorry, p not n. p है ना, np तो x का है. So that will be p, ये 0 हो गया, minus p square. So that is p into 1 minus p. So her I1, I2, IN, every random variable ij has a variance 1 minus p into p. So using star, variance becomes p into 1 minus p. How many times? N times. Okay. So we have this result for variance and for mean. क्लियर है बेटा सबको? Can you see why mean is NP? मीन एनपी क्यों होगा बेटा? n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, प्रोबेबिलिटी चांस है, मतलब कितने परसेंट आपको सक्सेस मिलेगा. देन ऑब्वियसली एनपी विल बी द मीन, राइट? दैट मेक्स सेंस, राइट? Okay, do this problem. The probability that a patient, the
probability that a patient recovers from a blood disease is 0.4 if 15 people are known to have contracted this disease and capital X is equal to number of people recovered, then find mean and variance of X. Use Chebyshev theorem to interpret the interval mu plus minus 2 sigma. पहले मीन और वेरिएंस बताइए मुझे क्या होगा. Is it a binomial process, beta? You have 15 people, each has that disease, and the chances that they will recover from the disease is 0.4, right? Now they are independent, right? If one person is recovered from the disease, second may or may not, independent of what has happened to the other person, right? So all these trials are independent. Each trial is resulting into two outcomes, success or failure, or probability of success is 0.4 every time, right? So this is a random process with, this is a binomial random process. With n is equal to 15 and p is equal to 0.4. So therefore mean will be np. So that is 15 times 0.4. So that is a 6. And variance will be n into p into 1 minus p. That is 15 into 0.4 into 0.6. So that is 3.6. So standard deviation will be square root of 3.6. That is 1.897. Okay बेटा, क्लियर? ये तो सिंपल आपने मीन और वेरिएंस निकाल दिया. नाउ कैन यू सी द मतलब स्ट्रेंथ की, अदरवाइज इफ आई गिव यू दिस प्रॉब्लम एंड आई आस्क यू टू फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, इट इज डिफिकल्ट. बट नाउ बिकॉज यू कैन see that this is a binomial random process, so everything is already there, you are just putting the formulas. So that is the idea, right? That when you have we are giving you some categories, so you have to decide, okay, which category it will fit in, and then for that category everything is ready made. You just have to use the formulas. That makes sense, right beta? जब आपको real world analysis करना है, we cannot do everything from scratch, right? We should have tools, so these are just the tools. Is that okay? So now can you tell me what it is asking in the second part? Chebyshev theorem याद है किसी को? क्या थी? Chebyshev theorem was given a random variable x, given a random variable, इसका binomial से कोई लेना नहीं है, any random variable x with mean, mu and standard deviation sigma, then probability that x will be between mu plus k sigma and mu minus k sigma was greater than equal to 1 minus 1 upon k square. Right beta? This was your Chebyshev theorem. So here they are asking that what is the probability that your random variable lies in the interval mu plus 2 sigma and mu minus 2 sigma. So that will be greater than equal to 1 minus 1 by 2 square. So that is 3 by 4. So ये क्या बन जाएगा आपका? इसको कैलकुलेट कीजिए. म्यू कितना आएगा? 6 minus 2 times 1.897 less than x less than 6 plus
2 times 1.897, probability that you have this thing is greater than or equal to 3 by 4. So this is probability that 2.206 less than or equal to x less than or equal to 9.794 is greater than or equal to 3 by, right? So now क्योंकि ये number of people है, so we'll say that probability that 2 to 10 people will recover is 3 by 4 is greater than or equal to 3 by 4, right? That makes sense. Okay, this is what we are calculating. तो आपके पास बस वही डेटा दिया हुआ है कि आपका सिर्फ with this data only you can make this kind of prediction. I told you, right? We are doing inferential statistics. What is inferential statistics? Where you have to make some kind of predictions about a situation, right? So you had this situation where ये वाली जो चीज है, ये 0.4 जो नंबर है, that will come from medical testing, right? They have मेडिकल टेस्टिंग किसी भी तरह की हो सकती है. यहाँ पे देर इज नो मेडिसिन लाइक टॉक्ड अबाउट, तो उन्होंने क्या किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा कि कितना चांस है कि बंदा इस डिजीज से रिकवर हो जाएगा. सो दिस नंबर इज अ मेडिकल फिगर एंड देन यू आर मेकिंग सम काइंड ऑफ प्रेडिक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. सो दैट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या था कि आपके पास नंबर्स है, आपने मीन और वेरिएंस बताना है बस. ओके, एंड देन यू गो बियॉन्ड दैट, you tell something more than mean and variance. For example, here we are telling that what is the chance that 2 to 10 people will recover, that is more than 3 by 4. कितना नहीं, 2.206 से बड़ा है नंबर, तो 2 से भी तो बड़ा हुआ. नहीं, जो नंबर 2.2 से बड़ा है वो 2 से बड़ा नहीं होगा. हाँ, अच्छा, हाँ, सॉरी, ठीक है, ओके. 3 to 10 it will be, the chances are 3 by 3 by 4. 9, हाँ, यहाँ पे 9, ठीक है, क्योंकि 9.7 से छोटा तो 9, 3 to 9. ओके, सो ये देखो आपको अगर आप कभी भगवान ना करे कभी डॉक्टर के पास जाओ किसी पर्टिकुलर सर्जरी के लिए, दे टेल यू समथिंग लाइक दिस कि इसका इतना सक्सेस रेट है, these are the chances of recovery, right? So this kind of analysis is actually done in the hospitals. Okay बेटा, so जो medical आपका पूरा analysis होता है, that include this probability and statistics. So for that we have specialists जो probability and stats plus medical expert होते हैं, they make this kind of analysis. Okay बेटा, yeah, so it will be from 3 to 9. Okay. Okay, so next is, so this was everything about binomial random variable. So next is hypergeometric random variable. So now what is the situation? So the most important thing for you is to understand कि जो आपका given problem है वो कौन सी कैटेगरी में फिट हो. ठीक है, तो अभी तक तो सिर्फ बाइनोमियल है, देन now we will add categories. So you have to figure out कि कौन सी कैटेगरी में आपने उस पर्टिकुलर सिचुएशन को पुट करना है, right? So the situation is you have n items and out of these n items k are good items. ये जरूर नहीं है गुड ही हो, मतलब k इज डिजायरेबल, बस जो हमारी डिजायरेबल आइटम्स है ना. जैसे लास्ट क्वेश्चन में वी वर लुकिंग सक्सेस एज दैट वी विल गेट अ डिफेक्टिव आइटम, राइट? सो दैट इज ओके. सो ये हमारे डिजायरेबल आइटम्स हैं. सो यू आर चूजिंग स्मॉल n items, okay, and x is number of good items chosen in these small n number of items.
सिचुएशन में आ गई बेटा. So you have capital number of items, and then in that lot of capital number of items, capital K number of items are good and all other are bad items, n minus k, and you are choosing small n number of items. What I am looking for, that in that chosen small n number of items, how many good items I have chosen. So what are the possible values which x can take? Tell me. What are possible values for x? Tell me बेटा. x की वैल्यूज बताइए क्या होगी. हो सकता है कोई भी ना हो, 0, 1, 2 up to n. Okay, right? You have chosen small n number of items, then obviously number of good items can be 0 or 1 or 2 or small n. So this is called a hypergeometric random variable. Hypergeometric random variable. Why this name? ये अपने आप देख के आना. मैंने आपको बाइनोमियल के लिए बताया था कि why the name binomial. Why we call it as a hypergeometric random variable. Okay. And PDF, the corresponding PDF क्या होगा बताइए बेटा. Probability that x is equal to small x. बताओ. आराम से you should be able to do this. What are total number of ways बेटा? Probability क्या होगी? Favorable number of ways divided by total number of ways. So what are the total number of ways यहाँ पे? ये तो बता सकते हो फटाफट. Capital N items है, small n number of items you are choosing. What are the number of ways? क्या हो गया भाई? n से n. ठीक है. Now what are the number of ways that there are x good items? बताओ बेटा. x good items मतलब good items कितनी है? k. So k में से मुझे x चूज करनी है, right? And how many left? Bad items कितनी है? n minus k. n minus k से मुझे कितनी चूज करनी है? मुझे टोटल स्मॉल n चूज करनी है ना. x मैंने चूज कर दी गुड आइटम्स, तो n minus x. ओके, सो दिस इज योर PDF. क्लियर है बेटा ये चीज? किसी को नहीं समझ में आए तो बताइए प्लीज. सो यू हैव कैपिटल n number of items. I have to choose small n number of items. Total number of ways will be capital NCN. And what are the favorable ways? I want that x items should be good. इसका मतलब जो कैपिटल K नंबर ऑफ गुड आइटम्स है उसमें से मैंने कितनी आइटम्स यूज की? x. और बाकी जो मेरा n माइनस k आइटम्स बच गया उसमें से मैंने क्या चूज किया? n माइनस x आइटम्स. किसी को डाउट बेटा इसमें? स्मॉल. This is how many number of good items I have chosen. Small x is the value which your random variable can take. Can you see the difference? What is happening from binomial to hypergeometric? यहाँ पे हम रिप्लेस नहीं कर रहे बेटा, है ना. ये वाला फॉर्मूला उसी का ना, जब आप यू आर नॉट रिप्लेसिंग. वहां पे क्या था कि इंडिपेंडेंट ट्रायल्स थे, कि पहला ट्रायल में पहला सक्सेस और फेलियर, दूसरा सक्सेस और फेलियर. यहाँ पे क्या है कि वही है कि गुड आइटम्स एंड बैड आइटम्स, सक्सेस एंड फेलियर इज स्टिल देयर. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, लॉट में से आपने एक आइटम निकाल ली, देन द सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम दोबारा इसको रिप्लेस नहीं कर रहे. कैन यू सी दैट थिंग? So sometimes people say that hypergeometric is nothing but binomial without replacement. तो वहां पे आपका क्या है प्रोसेस कि मशीन से आपका प्रोडक्ट बन के आ रहा है. So there are so many products that आपने पहला प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट दे आर इंडिपेंडेंट. इसका मतलब दैट इज सेम एज, अगर इंडिपेंडेंट मतलब आप रिप्लेस कर रहे हो, है ना. जैसे आपने एक डेक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट? 4/52, sorry 12/52, right? And then if you don't put it back, and for the next card, what will the probability of getting a heart?
that will be either 12 by 51 और 11 by 51 depending on कि first card क्या था. तो ये independent events नहीं हुए ना. So this is a situation for hypergeometry. But if I have a deck of cards, I take a card out and I ask what is the probability of a heart, that will be 12 by 52, and I put the card back. For the next time I ask what is the probability of getting a heart, that is again 12 by 52. So this kind of process is your binomial process where you are putting the things back. Okay, and the first kind of process is your hypergeometric process जिसमें आप चीजें वापस नहीं रखते. आया समझ में बेटा? Yes or no? Okay, so basically, so this is a situation for a hypergeometric random variable that you have a bag with capital N number of items जिसमें there are successful items and failures also, मतलब good items and bad items. Then you have to find out what are the number of possible good items. Okay, so that capital X is number of good items chosen when you choose small n number of items. So this will be your corresponding PDF. किसी को PDF में डाउट बेटा? क्वेश्चंस इसके कल करेंगे. Tomorrow we have a class, right? No. You're done for this week, right? Okay, next week करेंगे. So किसी को ये नहीं समझ में आया PDF? ये फॉर्मूला सबको क्लियर है बेटा? Yes? Okay, good. So इसका मीन लिख रही हूँ मैं. मीन for this random variable is nk by capital N. Okay, and variance is capital N minus n upon n minus 1 times n times k upon n times 1 minus k over n. इसका प्रूफ नहीं करेंगे. Mean for a hypergeometric random variable will be n times n is number of items you are choosing, k is the number of good items, capital N is the total number of items, and variance will be this. Okay, proof कर सकते हो on the similar lines जैसे हमने उसके लिए किया है, but हम for this course will skip it. Okay, so problems will do next week. इसकी problems next class में. Okay, thank you.